लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस एक्चुअली मेक व्हाट यू आर. लाइक ऐसे कि जब आप एक पत्थर को देखते हैं ना, जो वो गोल होता है दोनों तीनों चारों तरफ से, वो इसलिए गोल नहीं होता क्योंकि वो उसकी साख्त ही ऐसी है. वो इसलिए गोल होता है कि वो पहाड़ की चोटी से चला है और टकरे और चोटे खाता, घूलता घूमता जैसे जैसे हो सकता था वो मतलब पहाड़ से जमीन तक पहुंचा है ना. तो जैसे जैसे उसका जो जर्नी है उसने उसके सारे जो नोके और कोने हैं वो सीधे कर दिए हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वेव बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशियन. और जैसे कि आपको पता है कि सुपर सोल की सीरीज़ आ रही है जिसमें हम उन्हीं पर्सनैलिटीज़ को आपके साथ मिलवाते हैं जिनकी सोल टू सोल कनेक्टिविटी होती है और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्क हैं वो न सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर अपना एक मुकाम रखते हैं बल्कि साथ साथ वो कुछ ना कुछ पे बैक भी कर रहे होते हैं. जब भी हम जर्नलिज्म की बात करते हैं या किसी ऐसे होस्ट की बात करते हैं कि जिसको देखते हुए आपका दिल नहीं चाहता कि आप स्क्रीन से एक मिनट के लिए भी नज़रें हटाएं, तो मेरे जहन में जो पहला नाम आता है वो आता है आयशा जहां ज़ेब का. और आज हम उन्हीं के पास हैं, उन्हीं के घर में, उनके साथ एक इनफॉर्मल गपशप करेंगे और इसके साथ साथ उनसे पूछेंगे भी कि वो इतनी ज़्यादा महारत से हम सबको किस तरह अपने साथ ग्लूड रखती हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. कैसी हैं आप? गुड, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और आपने टाइम निकाला और मुझे तो आप खैर वैसे ही बहुत प्यारी लगती है, बल्कि इनका तो मैंने नंबर भी प्यारी वाली आयशा कह के सेव किया. दैट्स ट्रू, यू नो दैट. Yes, I do. In fact, आपने मुझे वो कर दिया स्पेल बाउंड. I can't say anything now. अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि आपका जो जर्नलिज्म का एक जर्नी है और उसमें आप किस तरह आई, फिर आपकी पर्सनल लाइफ, बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट यू, तो आपने बोलना है. आई जस्ट वांट टू हियर अबाउट इट. सो व्हाट वाज द बेसिक? My journey, Sam, was not something that I had designed myself. My life was completely different from what it is now. जर्नलिज्म में पढ़ना बहुत अरसे से चाहती थी, यानी बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, बिकॉज मुझे वो जो टिपिकल एक इंडियन फिल्म में वो जो पत्रकार टाइप आते थे ना लोग, वो बैग पहन के कपड़े का और जीन्स की शर्ट और जीन्स का ट्राउज़र और वाइट कुर्ता, वो पहने हुए लोग और उस तरह धक्के खाते हुए लोगों को बहुत रिबेलियस और बड़े रेवोल्यूशनरी और दुनिया से अलग माइंडसेट रखने वाले लोग, वो बहुत पसंद थे. तो आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दैट. और लिखने का शौक़ मुझे बचपन से था. सो मेरी व्हाइल आई वाज अ किड अबाउट 13-12, तब से छोटी छोटी कहानियाँ, पोएम्स यूज्ड टू पब्लिश इन आस एंड न्यूज़ और अपने स्कूल के उसमें और फिर कॉलेज में लेटर ऑन. सो द फैक्ट इज़ कि लिखने का कीड़ा हमेशा से था. But Ammi had a different personality from myself. Ammi was very docile and introvert, not very active, not very proactive, etc. etc. तो Ammi, and because she was a divorced female, और जिस टाइम की बात मैं कर रही हूँ, आज भी it's a taboo, तो उस टाइम पर भी बहुत बड़ा taboo था जो Ammi फेस कर रही थी. और उनके लिए एक ये कि she was divorced and then the only daughter वो मैं थी. अच्छा, आपको सिबलिंग्स? नहीं, आई हैव नो सिबलिंग्स. तो मतलब फ्रॉम माई मदर्स साइड. फादर्स साइड आई हैव अबाउट 8 siblings. So वो उन्होंने, because he moved on in life and he got married again. And your mother dedicated herself towards you? Yes, to me. तो खैर कहने का मकसद ये कि वो जब आपका एक ही अंडा होता है ना, तो आप उसे बहुत संभाल के रखते हैं कि ये टूट ना जाए, ये ख़राब ना हो जाए. तो मम्मी को अक्सर छेड़ा करती थी कि आपने एक अंडा पैदा किया और वो भी गंदा, मतलब उसमें दुनिया जहान की रिबेलियन जो है ना वो भरी हुई है कूट कूट के. सो आई वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज. बट टेल मी, वाज दैट काइंड ऑफ फीलिंग इन योर थॉट, जिस तरह की आप कह रही हैं कि आप हमेशा से रिबेलियस होकर सोचती थी, उसका ताल्लुक इस चीज़ से कहीं आपको लगता है कि बिकॉज यू हैड सिंगल मदर और उसमें आप उसको रिएक्शनरी आप हो जाते हैं? It was not, but sometimes I used to even, अब मुझे एहसास होता है कि I shouldn't have, but as a child तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकती थी. I was very expressive with my mom. I used to be very मतलब मैं बहुत क्रिटिक थी अपनी माँ का. क्रिटिक यानी she actually took over my grandmother's house जब वो वापस आई हैं, मतलब अपने in-laws से वापस आ गई, और then केस वेस चल रहे थे और मामलात थे. अच्छा. So काफ़ी it was a very it was not a comfortable divorce. It was a very distasteful separation. Okay. और बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी अम्मी के लिए. लेकिन ये कि मतलब अब जैसे all things have to end, अम्मी वाला रिलेशनशिप had to end this way. मुझे बहुत
प्रॉब्लम होती थी कि आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, अम्मी आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए. एंड शी यूज्ड टू रिफ्यूज, शी यूज्ड टू से कि नहीं तुम्हें समझ नहीं है, देखो बच्चियां जो होती हैं ना बाद में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. जो स्टेप फादर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट somebody else's child, they can be abusive and etc. And I used to always say कि नहीं अम्मा you should have gotten married. एक तो मैं हूँ, मुझे नानी के घर छोड़ दें, I would be more comfortable. हो सकता है वो अच्छे निकल आए, हो सकता है ज़िंदगी में ऐसा. And I was only 4 or 5 when I used to say all this. Seriously? Yes, I was only 4 or 5. जब हम अब्बा की तरफ से वापस आ गए कराची से, तो मैं अम्मी को ये कांस्टेंट काउंसलिंग करती रहती थी और अम्मी को ये लगता था कि पता नहीं इसके दिमाग में ये किसने कूट कूट के भर दिया. It was actually nobody, it was myself. लेटर ऑन मतलब जब वो तैयार नहीं होती थी, क्योंकि उस जमाने के लोगों को ये लगता था कि अगर कोई the league that my mother was from, she thought क्या है मैं तैयार होंगी तो लोगों को लगेगा कि यार इसका तो कहीं किसी के साथ चक्कर है, that is why ये बहुत तैयार है, ये बहुत खुश है इस डिवोर्स से. सो वो तैयार नहीं होती थी. शी was very serious and introvert. तो मुझे होता था कि यार ज़िंदगी hasn't ended for you, one person just left you, it's not your fault. तो आपकी नहीं बनी हो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, move on in life, put on some lipstick, go for a drive. अम्मी was very scared. मैं हमेशा से बहुत adventurous और rebellious थी because अम्मी बहुत docile थी. So जो आपके बचपन के जो हालात होते हैं, आपकी ज़िंदगी के जो हालात होते हैं, वो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत असर रखते हैं. मतलब आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत आउटगोइंग और प्रोएक्टिव मदर्स के बहुत डोसाइल और साइलेंट बच्चे. हाँ एग्जैक्टली. दिस इज ह्यूमन नेचर के जब जो बहुतात में आपके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं ना, उसके ऑपोजिट आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है. आई एम मोर लाइक माई खाला. शी यूज्ड टू बी वेरी आउटगोइंग, प्रोएक्टिव, सोशल. मतलब जब उन्हें कैंसर भी हो गया था तब भी वो शी वाज लाइक अप एंड अबाउट. तो वो आई एम मोर लाइक हर बिकॉज आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हर. आई लुक्ड अप टू हर एंड व्हेन शी पास्ड अवे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था एज अ चाइल्ड. तो वो जिंदगी के जो हादसात हैं ना, वो बस ऐसे रहे कि. डू यू हैव एनी मेमोरीज रिगार्डिंग योर फादर? आपको इंटरेस्टिंगली आई अबाउट 10 years ago आई मेट हिम. अच्छा. हाँ, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और फिल्मी सी कहानी है. तो वो आई टेल यू हाउ. एज अ चाइल्ड अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की कि मेरा जितना जो वो मेमोरी बैंक था जिसमें वालिद साहब की तस्वीर, वालिद साहब का चेहरा और हम, वो सब उड़ गया मेमोरी कार्ड में से. वाक़यात याद रह गए. यानी कैसे हम जाते थे, हम फ्लाई आउट करते थे, कराची पहुंचते थे, हम वहाँ से क्या खाते थे, कैसे घूमते थे, साहिल समंदर के ऊपर हम किस तरह मतलब चक्कर लगाते थे. आई रिमेंबर एवरीथिंग. यहाँ अम्मा अब्बा के झगड़े याद थे कि कैसे झगड़े होते थे, क्यों होते थे. एक दिन झगड़े में वो मुझे स्कूल से पिक नहीं करने आया, अम्मी भी नहीं पिक करने आई. बाद में झगड़ा सारा अम्मी के ऊपर हो गया कि तुम्हें नहीं पता था कि बेटी को पिक करना है. सो इट वाज ये सब चीज़ें जो 2-2.5 साल का बच्चा इतना मेमोरी बैंक कैरी कर सकता है, वो मुझे याद था. लेकिन चेहरा अल्लाह ताला ने धुंधला कर दिया, मुझे याद नहीं था अब्बा का चेहरा. यानी इस ज़िंदगी में ऐसे भी हुआ कि मैं और मेरे वालिद एक दूसरे के आमने सामने आए बट वी नेवर रिकग्नाइज ईच अदर. यस. तो बहुत ही इंडियन फिल्मी टाइप स्टोरी है मेरी ज़िंदगी की. सो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि अनबिलीवेबल हैं लेकिन हैं बहुत फिल्मी. ऑब्वियसली है, मतलब कि ये तो बहुत ही फिल्मी है. क्या आमने सामने है और आपको नहीं पता? एक दफ़ा तुम शॉपिंग मॉल में एक दूसरे को वी जस्ट क्रॉस्ड but we did not know, both of us. Later on he found out that I was there, so he sent a message through somebody कि मैंने आपको आज उधर देखा था. तो आप मिलें फिर कभी के? I was very bitter. Okay. Very bitter as children become when they realize. और आपको पता ना हमारा माशरा आपको ज़बरदस्ती इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि आपको कोई छोड़ के चला गया. हाँ, ये जो एक है ना फीलिंग, ये फिर नहीं जाती आपके अंदर. ये जो being abandoned है ना, हाँ, चीज़, हाँ. वो चीज़ फिर इंसान के अंदर रह जाती है. और I was very bitter as a child regarding him. Okay. I couldn't hear his. मैं उनकी अभी ये है कि I've made peace with myself now. कि मैंने वो जो जितने बोझ मेरी ज़ात पे थे ना, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे उतार के रख दिए कि I cannot go on with such. मैं इतने I think that's beautiful. आप कितना अर्सा है, कितना heavy baggage लेके चल सकते हैं. You cannot. मैंने उतार के अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया. Because आप जब दिल में कोई चीज़ रख के जीते हैं ना, तो your heart is heavy and you cannot live with this heaviness. Exactly. खैर, अच्छा हम उसी तरफ जाते हैं कि जो आप कहते हैं कि जर्नलिज्म की तरफ आपका रीजन ये था. And then how did you come up with this thing? Yes. But this was very interesting. Intriguing. It was. So fast forward 10 years.
आगे चले जाते हैं बचपन से, 10 साल आगे आ जाते हैं. My husband passed away. मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया और उसके बाद I was actually compelled to raise up 3 kids alone. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी. So I started teaching again. I met a friend who's now my husband. Okay. So yes. And he's a wonderful person. You've met him. Mashallah. So we met and we were very good friends. I used to share a lot with him. Then Ammi contracted cancer. Okay. तो उस दौरान उन्होंने अम्मी ने प्रपोज किया कि तुम शादी कर लो. He said give me some time. I need to think because he was not married before me. Okay. So वो ये करते 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 हमारी शादी हो गई eventually. मतलब वो भी एक लंबी स्टोरी है, बड़ी दास्तान है कि हम दोस्त थे और फिर मैं घर से निकल गई ये कह के कि अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरा दोस्त है. क्योंकि वो मेरा दोस्त है और अगर शादी होगी तो दोस्ती खत्म हो जाएगी. और तुम्हारे ज़हन में ये बात जरूर होगी कि फिर कोई बेटर चीज हुई. मैंने अम्मा से कहा, मैं कहा अम्मा जिंदगी गल सड़ के एक दोस्त बना इस काबिल के जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आंखें बंद करके अब उससे शादी कर लूं तो फिर मेरी दोस्ती तो गई ना भाड़ में. और शादी के सारे शौक मैंने पूरे कर लिए हैं एक लव मैरिज करके. तो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. But that was a good idea basically. That turned out to be very good idea, but मेरा इरादा नहीं था शादी का दोबारा. तो अम्मी actually pushed me और then he himself said कि you know your mother is dying, why can't you actually do this for her? तो ठीक है, अगर नहीं तुम्हें लगेगा कि हमारी दोस्ती खराब हो रही है तो हम इस रिश्ते को इसको खत्म कर देंगे, दोस्ती रखते रहेंगे. Hi, so sweet. So this is what happened and then I got married. और फिर मुझे एक ऑप्शन मिली. I was teaching in HSN and I was residing there as well. तो मुझे फिर एक friend was working with आफ्ताब इकबाल. अच्छा. She's a singer, Mohira. तो उसने मुझे कहा कि they're looking for somebody पढ़ा लिखा and now that you have lost a lot of weight, why don't you go and try? So I just went there. उन्होंने मुझे एक पेपर दिया. उन्होंने कहा जी हम यूं देखें हंसे एक दो अल्फाज के. बड़े परफेक्शनिस्ट हैं. जी बिल्कुल. तलफ्फुज़ इवन एज अ गेस्ट जब मैं उनके प्रोग्राम में गई थी तो मुझे बड़ी डांट पड़ रही थी कि ये क्यों कहा. मैंने कहा यार मैं तो गेस्ट हूँ. He said so what? तो उन्होंने एक दो अल्फाज के तलफ्फुज़ चेक किए और शाम को मुझे कॉल आई कि आप वापस आए, आपको आफ्ताब साहब बुला रहे हैं. He met me and he said कि we are very lucky to have you. And जब उन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह पता की तो I was an MPhil at that time, MPhil in English language teaching. तो he said we are very lucky to get you, तो join us. Initially it was one program as a co-host. फिर करते करते उन्होंने completely मुझे दे दिया सारा का सारा. लेकिन एज अ सिंगर आफ्ताब साहब की एक बहुत अच्छी और एक बहुत उनकी ऑब्वियसली आई पर्सनली थिंक वो बहुत रिसर्च करके और फिर उनकी कमांड बड़ी है, प्रोग्राम पे ग्रिप रखते हैं. कोई भी होस्ट ना Sam doesn't stand alone. That person has a group of people supporting him, which are researchers, which are producers. आप भी अगर आज यहाँ हैं तो of course you have a team with you. You cannot stand there alone. मतलब आपका कैमरा कौन फिक्स करेगा, लाइट कौन लगाएगा, माइक कौन देगा, पेपर्स कौन प्रिंट करके लाएगा, रिसर्च कौन कर. It's all teamwork. It's a teamwork. So आफ्ताब साहब का he has developed a very good team and he is an excellent manager and I have learned so much from him. No doubt in that. Indeed. मैं बल्कि उनका जब इंटरव्यू करने गई तो मैं बड़ा हंसी उनके साथ. मैंने कहा कि मैं आपसे जब सीख रही थी तो आपको बिल्कुल पता नहीं था कि मैं आपसे सीख रही हूँ और जब आप चले जाएंगे तो आपकी जगह पर मैं आ जाऊँगी. तो ये वो वाली जो थी ना सिचुएशन थी कि जहाँ पर जब when he left तो नईम बुखारी साहब के बाद the program was a complete disaster. So then the team decided कि तो आपने अकेले कैसे एक्सपीरियंस था आपका इतने बड़ा, मतलब आई मस्ट से कि आपका तब तक बहुत नॉलेज और सब कुछ था, बट इवन देन being a female, tell me this thing, that is the point. हाँ एक्चुअली और कुछ भी इतना बड़ा मसला नहीं. हमें अपने ऑडियंस और मैसेज को भी तो देखना है ना. वो यूज्ड टू नहीं है कि एक अकेली औरत एक इतनी कॉर्पोरेट सेक्टर पे सीईओ बन के आ जाए या कोई प्रोग्राम पूरा हैंडल करे. वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन एक खातून का मर्दों के सर के ऊपर बैठ जाना और उनको डांटना या उनको कुछ पढ़ाने की कोशिश करना, तो मेल ईगो बहुत इनिशियली हर्ट हुई. कुछ मर्द हजरात और फीमेल्स ऐसी थी जो बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन मोस्टली पीपल वर लाइक यार ये नहीं जच रही है, नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक है. सो और इनिशियली बिकॉज आई वाज दिस थिन, मैं बहुत दुबली हो चुकी थी तब तक. सो इट वाज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड एट ऑल. आई वाज हेयरिंग फ्रॉम एवरी क्वार्टर कि नहीं जी यार ये जच नहीं रही है, ये बच्ची है, कैसे इससे होगा. हालांकि बिल्कुल भी बच्ची नहीं थी, बट स्टिल आई हैड 3 kids एट दैट टाइम. स्टिल
وہ لیکن لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ جی بہت چھوٹا چھوٹا امپیکٹ آ رہا ہے اس سے. خیر اینی ویز وہ کرتے کرتے اٹس اے جرنی آف اباؤٹ 6 years ناؤ. تو اب یہ کہ اسٹینڈنگ ہیئر ٹوڈے مے بی اف وی اسٹارٹ سم تھنگ ناؤ اٹ وڈ بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایکسپیرئنس فرام واٹ آئی ڈیڈ in these last 6 years. Now I understand the hangovers of media and the problems media has and how females have a lot of issues handling such programs, because میرے بعد کوئی ایسی دوسری خاتون یا مرد نہیں ہے ابھی, اور یعنی اس پیٹرن کو سکسیسفلی چلانے والے صرف 2 لوگ ہیں. آپ ہیں آفتاب صاحب, میں اور آفتاب صاحب, ٹھیک ہے. حسب حال کا پیٹرن کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. ایون مذاکرات کا بھی ڈفرنٹ ہے. آپ کے پروگرام میں نالج ہے, ہمارے پروگرام میں اب جب وہ ختم ہونی شروع ہوئی نا نالج, اور پکڑ پن اور ولگیرٹی نے اپنا آپ بہت زیادہ انسرٹ کرنا شروع کر دیا, دیٹ از وین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار چیزیں اچھے وقت پر اچھے طریقے سے ختم ہو جائیں تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ڈسٹیسٹفل ہو اور ڈسرسپیکٹفل ہو کسی کے لیے بھی, بوتھ دا پارٹی. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو جسٹ سیٹ مائی سیلف اسائڈ. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بڑا لٹریچر اورینٹیڈ یہ سب کچھ تھا, سو اس جگت بازی میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کیا, اینڈ اسٹل کین یو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ, جگت ٹائپ؟ یس. اب تو خیر عادت ہو گئی ہے بہت زیادہ, 6 سال مطلب وقت, بلکہ جو latter 2 kids جو پیدا ہوئے ہیں بعد میں. Now I understand when first time when I met you, I was like, she's so extempore یار, ہر بات کا اتنا فوراً جواب آپ کے پاس ہوتا تھا کہ میں حیران ہو رہی تھی. Sam, the thing is کہ life and experiences actually make what you are. Like I say کہ جب آپ ایک پتھر کو دیکھتے ہیں نا, جو وہ گول ہوتا ہے دونوں تینوں چاروں طرف سے, وہ اس لیے گول نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی ساخت ہی ایسی ہے, وہ اس لیے گول ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے چلا ہے اور ٹکرے اور چوٹے کھاتا, گھولتا گھومتا جیسے جیسے ہو سکتا تھا وہ مطلب پہاڑ سے زمین تک پہنچا ہے نا. تو جیسے جیسے اس کا جو جرنی ہے, اس نے اس کے سارے جو نوکے اور کونے ہیں وہ سیدھے کر دیے ہیں جیسے اس پتھر کے ہوتے ہیں. تو انسان کا بھی ایسے ہی ہے کہ جب لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ کہیں آپ کو ڈینٹ ڈالتے ہیں, کہیں آپ کے اوپر اپنا ڈیمیج کرتے ہیں, وہ آپ کو ایک راؤنڈیڈ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں. جو لوگ ایوالو کرتے ہیں ساتھ ساتھ زندگی, کچھ لوگ اسٹیٹک ہو جاتے ہیں, جو لوگ اسٹیٹک ہو جاتے ہیں پھر ان کی وہ وہیں رک جاتے ہیں, پھر ان کی وہ ایک جرنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا بھی. I totally understand and I totally second you, because چیزیں آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں, and the way you explained everything, I had no idea about all these things. I always look up at you as a motivational person or an inspirational person. I still believe کہ life کی worst میں بھی اگر آپ کھڑے ہیں نا, تو you should think that there will be a tomorrow which is going to be different from today. بہتر بھی ہو سکتا ہے, اس سے برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. So there is a 50% chance of life where you can actually say کہ ہاں نہیں, کل کا جو آئے گا وہ کل پچھلے کل سے بہتر ہوگا. And things go on. And you have to go on. You have to. یعنی giving up in life is not a point. Exactly. It's not a point where you should stand. You should always be trying harder. اتنی انرجی کہاں سے آتی ہے؟ Sam, کافی حد تک تو میں نے آپ کو بتایا میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے. دوسری بات یہ کہ when you have a very supportive partner, MashaAllah, when you have a good friend instead of a husband, this is blessing. This is indeed a blessing. So وہ actual motivation آپ کے پاس ایک complete package ہے. اب yes, اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے. I have a complete package, الحمدللہ. MashaAllah. اچھا آج مجھے بتائیں کہ جس طرح رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہیں ہمارے ملک میں, اور اس کے اندر مطلب بہت سی کانٹرڈکشنز بھی آتی ہیں, کانٹروورسیز بھی آتی ہیں, اینڈ ایٹ ٹائمس میں نہیں کر پاتی ہوں, کیونکہ مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ I rest of all months, like I cannot dress up like that and everything, but at the same time they have a very positive impact on society. Yes, of course. So how do you take Ramzan transmission? When I came into this business, مجھے تو بالکل بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا, because I was in infotainment. I thought infotainment and entertainment is the same thing. Later on I realized کہ no. So entertainment کا قصور یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ entertainment ہوتی ہے اور نہ نیوز ہوتی ہے. اچھا, ہم جس entertainment میں میں کام کری تھی وہ typical پنجابی جگت سے related تھا. And at that time میں HSM میں پڑھا بھی رہی تھی, تو میرے لیے یہ بھی بہت مشکل تھا کہ وہاں اسکول میں صبح مجھے ایک ٹیچر کا امپیکٹ رکھنا ہے. یعنی ٹیچر کا امپیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے اوپر زیادہ سوال نہیں ہوتے, آپ نے بتانا ہے, بچوں نے کرنا ہے.
لیکن شام کو جگت کے ٹائم پر وہ جگت کر رہے ہوتے تھے اور میں ہنس رہی ہوتی تھی. سو ایک دن ایک بچے نے انتہائی معصومانہ سوال کیا مجھ سے مس 8 میں, کہ کیونکہ میری بہت فرینکنیس تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور سخت بھی میں تھی ایٹ دا سیم ٹائم. تو مجھے کہتا ہے کہ مس یہاں تو آپ بڑی سخت ہیں, شام کو جب وہ آپ چینل پہ جاتی ہیں وہاں وہ آپ کو جگت کراتے ہیں, آپ ہنستی ہیں, وہاں کیسے برداشت کر لیتی. میں کہا بیٹا وہاں پر آئی ایم دا ہوسٹ آف دیٹ پروگرام, یہاں پر میں تمہاری ٹیچر ہوں, یو آر ناٹ سپوز ٹو آسک دس کوسچن. بٹ یہ چیز آپ کے ذہن میں ضرور رہے گی. یہ ڈیفینیٹلی آئی آلویز کوٹ دس چائلڈ, مجھے اب اس کا نام بھول چکا ہے بٹ آئی ریمبر, آئی ہوپ کہ وہ میرا بچہ نہیں تھا. سو کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ انیشلی مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا اور میں انکمفرٹیبل محسوس کرتی تھی when I was the co-host, جب میں وہاں بیچ میں بیٹھتی تھی سب کے. یہ لوگ جگت کرتے تھے, بلا وجہ ٹانٹ کرتے تھے, مجھے برا لگتا تھا کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں, لیکن میں ریئیکٹ نہیں کرتی تھی کبھی بھی ان کے اوپر کہ یار ٹھیک ہے ان کا فارمیٹ ہی ایسا ہے. بٹ آہستہ آہستہ مجھے پھر عادت ہو گئی, جتنی زیادہ جگت ہوتی تھی اتنا زیادہ مزہ آتا تھا کہ اچھا رسپونڈ بھی کرتی تھی جگت. ابھی بھی وہ لوگ جب سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم لوگ کی سب کے ساتھ ہی دوستی ہے, تو جب ساتھ بیٹھے ہوتے تو کبھی کبھی جملہ آ جاتا ہے مجھے بھی, تو میں بھی کہہ دیتی ہوں. نہیں اب تو آپ بڑی ماہر ہو گئی ہیں اس میں, آپ تو ایسے ٹکا کے جواب دیتی ہیں. اب جو ہے نا اب بندے کو ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے یہ کیا آئے جواب دوں. اچھا رمضان ٹرانسمیشن پہ آپ کا کیا پوائنٹ؟ میرا آئی آلویز وانٹیڈ, اب وہی بات بتا رہی تھی کہ انفرٹینمنٹ سے بات شروع ہوئی تھی. جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار جتنے بھی ہوسٹ ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن ان کے لیے کمپلسری ہے, وہ سب کرتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی آپ اگر نظر دوڑائیں تو جتنے بھی ہوسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں رمضان کی ٹرانسمیشن میں ساتھ ہوتے ہیں. بٹ جیو کے ساتھ یہ تھا کہ جیو کا لاہور سینٹر جو ہے ویری ان ایکٹیو, اٹس ویری ان ایکٹیو. کراچی از دا ہب. اب سبھی چینلز کے ساتھ ایسے ہی ہے تقریباً کہ جو کراچی ہے اس میں ہی ساری ایکٹیویٹی ہے, تو رمضان ٹرانسمیشن بھی وہیں سے ہوتی ہے. تو آئی یوز ٹو لانگ فار دس کہ یار کبھی وقت آئے گا, کیونکہ دیکھیں آپ کے اندر, میرے اندر, ان سب حضرات کے اندر کہیں نہ کہیں خدا بستا ہے بے شک, اور آپ کا ایک تعلق بھی ہے اس رب سے. وہ تعلق کتنا گہرا ہے وہ آپ کسی کے ایکسٹیریئر کو, کسی کی ٹراؤزر شرٹ کو دیکھ کر نہیں جج کر سکتے, اور نہیں ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ججمنٹ کا جو کال آف ججمنٹ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اگر جتنا میں سمجھتی ہوں انسان تقویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھے اور اپنا اندر مضبوط ہو, وہ جو آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ ایک دفعہ زندگی میں آپ کو موقع ملنا چاہیے کہ آپ اسے پریچ کر سکو. ڈز ناٹ میٹر کہ آپ 12 مہینے ویسے نہیں, 11 مہینے نہیں ڈریس اپ ہوتے, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, بٹ ڈیفینیٹلی آپ کے اندر بھی رب کے ساتھ ایک تعلق کا وہ جو ایک لنک ہے نا وہ ہے. other than religion it's a spiritual thing, it's a connectivity. It's a connectivity, and I'm sure when it would come to you, Sam, you will be very comfortable talking about your relationship with Allah Ta'ala. ہاں obviously. ٹھیک ہے, so that is basically that. تو I wanted کہ ہم اس رشتے کے اوپر, میرے اور اللہ کے رشتے کے اندر جو یہ والا کلر ہے نا یہ ضرور سامنے آئے. سو وہ اللہ نے موقع دیا, not on a very big channel, but I still think کہ مجھے چھیڑتا ہے, علی بھائی کہتے ہیں کہ میں ساری, انہیں 15 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, اینڈ ہی سیڈ وہ اللہ کے مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں, بہت زیادہ, مطلب I feel کہ وہ بہت اسپرچولی کنیکٹڈ ہے. تو وہ مجھے چھیڑے تھے کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا, میں تم سے سینئر ہوں 15 سال سے میڈیا میں بیٹھا ہوں, پر مجھے نہیں موقع ملا اور تمہیں مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو یو شوڈ بی بلیسڈ, تم بہت بلیسڈ ہوگی تو تمہیں ملا ہے. So we should see actually positive side of every aspect. ہر چیز پہ criticism ضروری نہیں ہے. ہر چیز پہ دیکھیں, ہمارے معاشرے کا تو سب سے بڑا جو آپ سمجھیں نا اسٹون ہے وہ یہی ہے کہ مطلب پازیٹیو نہیں دیکھنا, نیگیٹو دیکھنا ہے. اچھا رمضان ٹرانسمیشن ہے تو چینل بڑا کیوں نہیں ہے, چھوٹا کیوں ہے یار, یو شوڈ لک ایٹ دس دیٹ how a person is doing. If I'm doing a good job, I think that's enough. Rather than کہ ایسے کیوں ہے, وہ تو پھر پنجابی کی مثال ہے نا, آٹا گوندی ہے تو ہلدی کیوں ہے. ہاں پھر تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ آ ہی جائے گا نا. آٹا گوندیں گے تو ہلنا تو پڑے گا, ظاہر سی بات ہے. نہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ آٹا, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فیکٹر تو نکل ہی آئے گا. دیکھیے جب آپ نے کیڑا نکالنا ہے نا
तो आप कहीं पर भी और किसी भी बात में निकाल सकते हैं. तो आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ब्लू सूट के साथ रेड दुपट्टे की क्या तुक बनती है, तो ब्लू है तो ब्लू होना चाहिए, राइट? या काले सोफे के ऊपर नीले कुशन की क्या तुक बनती है. सो जब आपने कीड़े निकालने हैं ना, तो उसके लिए तो यू हैव गॉट एम्पल. आपने जब किसी को सपोर्ट करना है तब आपके पास कितना मटेरियल है, दैट्स व्हाट मैटर्स. And that's actually, I think, the thing which we should think about. या हम लोग ये सोचते हैं कि किसी को लेग पुल करके नीचे कैसे गिराना है. ये नहीं सोचते कि जिसकी जो बेचारा एक पाँव पे खड़ा है उसको जगह दे दो ताकि वो दूसरा पाँव भी कंफर्टेबली रख ले. और एट टाइम्स हम इतने कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि अगर कोई कर रहा होता है ऐसी ट्रांसमिशन तो वी स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन कि लुक एट हिज और हर पर्सनल लाइफ एंड नाउ लुक एट, आई मीन सच थिंग्स हैपन. इसमें भी मैं समझती हूँ कि हमें टॉलरेंस कहीं ना कहीं. लेकिन इसमें भी सैम गलती कॉर्पोरेट सेक्टर की है. हर तरह के बंदों को ये ट्रांसमिशन दे दी जाती है कि आप ये कर लें. देखिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे आपने ही जिक्र किया कि जब आप शाम में एक और प्रोग्राम के एक और उसमें थी और सुबह में आप एक टीचर के तौर पर और एक उसमें, तो आपको खुद ही एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, और आपने फिर उसमें से चूज किया कि आपके लिए एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड टू दैट. मैंने जिंदगी की कोई फैसला जो था ना, कभी ये सोच के नहीं, मतलब जिंदगी का कोई फैसला मैंने खुद किया ही नहीं. एक्चुअली मेरे लिए अल्लाह ताला ने सारे रास्ते खुद ही बनाए हुए थे. जिस वक्त अम्मी वाज वेरी सीरियस, उस वक्त आई हैड वन ऑप्शन कि मैं दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर लूँ, क्योंकि अम्मी को मैं बेड पे छोड़ के 12 घंटे के लिए नहीं जा सकती थी कि मैं सुबह 8 घंटे स्कूल जाऊँ और फिर शाम को 6-8 घंटे रिकॉर्डिंग टीवी पे जाऊँ. तो फिर दिन का वक्त ख़त्म हो गया था क्योंकि HSN यूज्ड टू स्टार्ट एट 6. ठीक है, तो मेरे लिए कोई स्पेशल वो नहीं था कि ये स्क्रीन पर आती है या ये होस्ट बन गई है तो इसको इतना मार्जिन दे दे. नो, तो वो द फैक्ट इज़ कि उस वक्त मेरे लिए अम्मी बहुत इंपॉर्टेंट थी. और जो जियो ने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि आप जितना टाइम आप अपनी मदर को दे सकें दें. और वैसे भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि ऑन स्क्रीन जो चीज़ आप देख रहे होते हैं 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, उसके पीछे जो एक 5-6 घंटों की एफर्ट है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग. आप इसको एनर्जी जर्नी जो पूरी होती है, और वो हमारा शो जिस किस्म का था और जिस तरह तब शूट होता था 10 से 11 घंटे लगते. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड. इट वाज अ ग्रैंड, इट हैड अ लॉट ऑफ पीपल with a grand set with जब आपको पता है जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा मसाइल भी होते हैं, तो वो it had a lot of positives and at the same time a lot of drawbacks. ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है. सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है. अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें.